Okay. So very good evening to everyone present here in this session on financial functions in Excel. Today we are going to see how we can use the financial functions to take financial decisions, and we shall also understand some of the basics of financial decisions, like what is present value, what is future value, how you can take financial decisions, and how you should compare different financial products. So this session is meant for everyone who is willing to learn about finances and how to use some of the functions in Excel to take some decisions, some crucial decision in finance. So I've shared the file already with you all, and now I'm going to share my screen. And if you have any questions in between, you can write in the chat box, or you can unmute and speak. So all the participants are allowed to unmute themselves, and you can unmute and speak also. So we are going to start the session now, and this will go on for 90 minutes. So it's a 90-minute session. 10:30, we are going to complete this. And if you have any questions, you can just keep on sharing. And I want this to be a very interactive class. So keep on responding through the chat box. I hope the screen is visible to all. Yes, sir. Yes. So okay. Now see, today's topic, I have just designed this Excel with in a Bollywood style, the famous movie Hera Fairy you must have seen. So there are three characters in this movie, and the one Babu Rao, he is always inquisitive and he's always asking questions. So today he is going to ask some questions on finances, and we are going to answer those questions, right? So this is how what happens when you look at the financial functions for the first time. So before we start, let me just ask you this question. How many are looking at these functions for the first time? If you are just studying the financial function for the first time, you can write down first time in the chat box. If you're doing it for the first time, you can write down first time in the chat box. Or maybe you can raise your hands using the reaction button also. I will be able to see how many are doing it for the first time. Financial functions in Excel. First times. Okay, Shrisht. First, Diksha Jain. Okay, I've listened but not so familiar. Okay, great. So most of you are doing for the first time. Some of you have already heard about it or used them. It will be a revision for you all. Maybe I'll be able to bring some new elements in this today. Okay, so let's start with this. So those who are doing for the first time, just concentrate on the concepts first, and then we will use the functions, and you can ask your queries in the chat box also. Okay. So what is finance basically? What is financial function? So it is a financial function is a part of a financial management. So when we talk about financial management, it is an activity concerned with the controlling and planning of financial resources, which are limited and should be deployed carefully. Okay. So basically, we know that money is a very crucial part of our element, and we cannot just take any decisions without working on it, without working on the feasibility or the understanding the concepts. So today we are going to learn how to study the financial statement, how to take financial decisions based on different case studies on a day-to-day basis. And after this session, I believe that you would be all in a better position to take some financial decision, or at least understand what finance means. Okay, so before we start, some basic common points to be noted before learning the financial functions. Okay, number one, every financial function, or for that matter, every function starts with a is equal to sign or a plus sign, followed by function name and a syntax, and ends with the syntax. So this is basically a normal function in Excel. Whenever you use Excel and you put any formula or function in Excel, you have to always use a equal to sign or a plus sign. So just to illustrate, just to demonstrate, suppose I have different numbers in Excel and I want to take a total. So how do I do it?
So first, I'm writing down some numbers, maybe 10, 20, 30, 40, and 50. And I want to add them up. So what I'll do is alt is equal to is the shortcut key for the sum. So is equal to sum C2 to G2. So we get the total here 150. Okay. So you see that the function sum is preceded by a equals to sign, and then you have bracket, and then this is the range C2 to G2. Okay. So this is very basic thing that we do in Excel, that you have to start any function with a comma, with a is equal to sign, or secondly, you can just use a plus symbol also and write down the same function sum, and we will select this series, and this will also give us the same result. Okay, now moving ahead, second point, always put the investment amount in a function with a negative sign. Okay, so whatever arguments you put in the function, okay, so suppose we define any formula, the first formula that we are going to do is the present value. I will be talking about this concept also, but let me just clarify something with you. Whenever you type any function in Excel, Excel automatically gives you a hint about what the function is all about. So even if you don't know any function or formula in Excel, you can simply put it in the with the equals to sign, and that is how you can use that. So PV returns the present value of an investment, the total amount that the series of future payment is worth now. Okay, so it is going to give you the total amount of a future payment that is worth now. That is the present value. If you write down FV, that will become the future value. Okay, so these are some of the functions that we are going to see. And where do you exactly find financial functions? So when you go to the formula tab on the top, you will see that the formulas are categorized. This is the function library. Okay, I'm using 365. You may be using Excel 16, 13, 19, or any other version, but these functions and formulas are almost same. One or two formulas are additional in 365, but that doesn't make any difference, major difference. So when you see the financial functions, you will see a list or drop down of different financial functions in Excel. Okay, so whenever you click on any function, it will just open a dialog box, and it will allow you to put any values. So let us take an example over here. So suppose I take the first one, that is FB. Okay, so it opens a dialog box, and it is asking for functions arguments. That means what are the different parameters that you need to define here so that you can get the result. So to calculate the future value of any investment, that is the first thing that we are going to do. We first have to take a rate. So suppose I'm investing in a fixed deposit, which is going to give me 5% rate of return. So I write over here 5%. NPR is the period, the time period. Okay. So when you click on this NPR, it represents what it is. So NPR is the total number of payment periods in the investment. So suppose you are investing it for 3 years. So we can write down 3 years. And PMT is the payment each period. It cannot change over the life of the investment. So suppose you invest every month, you do a SIP, or you are doing a recurring deposit, then every month, whatever investment you are doing, you have to write it here. But since we are investing in a FD, that is a one-time investment, we'll write a 0 over here. Then PV is the present value or the lump sum amount that a series of future payment is worth now. Okay. So suppose I'm investing 1 lakh rupees, and I want to find out that what this 1 lakh would be after a period of 3 years at a rate of 5% return on investment. So PV should always be with a negative sign. So I have given in the notes that whenever you are working on any function, okay, your investment should be in with a negative sign. Now, what is the point in that? Why I have written like that? Because investment, whenever you are investing, that is the outflow of money, right? You are investing in a FD, so your money is going from your account and going to the bank account, and it's an outflow for you, right? So you put that into negative sign. If you don't put in negative signs, the result would be same, the answer would be same, but the result would be in negative. You can see that 1,15,762 is coming negative. Can you see the negative sign over here? Can we have a yes in the chat box if you can see the negative sign? If you can see the negative sign, yes.
Now just observe over here, if I put a negative sign here, then this negative sign goes away, and now we have the number in positive. Okay. Type. What is type? So is a value representing the timing of payment. Payment at the beginning of the period will be represented by 1. Payment at the end of the period will be represented by 0 or omitted. So it's not a mandatory field. Okay, you can skip this field also. But if you write 1, it represents that you are making the payment at the beginning of the period. And if you write 0, it represents you are making the payment at the end of the period. But in either of these cases, you are getting the same answer. 1 or 0, you are getting the same answer. Why? Can anyone tell me why we are getting the same answer? Because it's a one-time investment. So one-time investment, it's not a periodic investment. So in a periodic investment only, you have to specify whether it is the beginning or end of the period. Okay, so when you hit OK, you will get the answer over here. So here is the answer, and now we can see that the formula is mentioned over here. So this is one way of putting the formula. Okay, coming back to the index. So the first thing is that investment should always be in negative. Then elements of a function are to be separated by a comma. That we know that all the elements, whatever arguments you are putting, it should be separated by a comma. You can see that all the arguments, different arguments, are separated by a comma. So comma means that you are going to put a next argument once you have put the comma, right? Third, fourth, element of a function should be in the same sequence as shown in the syntax as you type the function name and open the parenthesis. Now this is important. Fourth point is very important. What it is saying that the function elements or the arguments, okay, I'll just mention arguments over here because we are using the same terminology as used by Excel. So arguments or elements of the function should be in the same sequence. Now, what do you mean by same sequence? What do you understand by this word same sequence over here? That means, for example, here, if you see this formula, if you just focus over here on the formula bar, FV 5% is the rate. So it is at the rate place. NPR is 3. Suppose PMT is not there. So I don't write anything in PMT. And I just skip this part. And I write 1 lakh and hit enter. I will get a different answer. So because I have positioned it wrong. So now it is studying PMT as 1 lakh per year. So if you're investing 1 lakh per year for 3 years at the rate of 5%, what you're getting is 3,15,250. But that was not the case, right? We invested only 1 lakh for one time. So you have to be very particular about what you are putting where. So now PMT, if there is no PMT, then you can write a 0. You can just keep it blank also like this. And then write the PV and the type, whatever type it is, 1 or 0. And now you are getting the right answer. 1,15,762 is the value of the investment after the end of 3 years. So any questions so far? Anything that you want me to repeat or you did not understand? Or if you have understood everything, you can write down clear in the chat box. You can write down clear if everything is clear so far. So don't treat it like as a webinar where you just listen. It's a kind of a live session. I prefer doing a live session because you all can learn at the same pace. We can interact with each other. So yes, keep on interacting with me. Summarize. Okay, fine. So let me just summarize it again. And I might use also Hindi also because some people would like me to use Hindi as well. Okay, so I'm summarizing it. Now, first, there are 4 things to remember. पहला, जब भी आप कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? या तो इक्वल टू साइन से होगी या प्लस सिंबल से यूज करेंगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला आप लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ सम, open a bracket, and I write down 10, 20, 30, 40, and 50, and close the bracket. Is it going to give me any result? Yes or no? Tell me. Is it going to give me any result?
I put the function and I put the parameters. I've defined the numbers. You can see where I have highlighted the yellow color. Okay, is it giving me the answer or it is not giving me the answer? It is not giving me the value. No. Why? Because we have not defined it with the, we have not put a equals to sign. So it is very important to make Excel realize that it's a function. You have used a function. So is equal to is important. If you don't put equals to, you'll not get anything. So if once I have replaced, when I put this equal to sign, you can see now I'm getting INR 150. Okay. Now you would be amazed to see that why, from where this INR has come. INR has come. Can you see that INR has come? I just put some numbers. Okay. Let me just reduce these numbers and 10, 20, 30, INR 60. So this INR is coming. Okay. How we can do this? When we convert this into a accounting format. So I've just defined this as the accounting format over here. Control 1 is the format cell key, control 1. And then instead of number, if you put currency, then it will show you the number, the currency INR and the rupee. Okay, if you want to remove the decimal, you can just remove the decimal over here, and now you will get the answer like this. Okay, चलिए. तो पहला पॉइंट ये था कि हम इक्वल्स टू लगा के स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले को. दूसरा कि आपको कॉमा लगाना है जब भी आप कोई वेरिएबल लिख रहे हैं. ठीक है, मैं सम इफ का फॉर्मूला लिखता हूँ, कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूँ. तो रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, तीन चीजें पूछ रहा है. तीनों चीजें आप जब मेंशन कर देंगे तो बीच में कॉमा आना चाहिए. तीसरा कि जब भी हम कोई आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करेंगे वो सेम सीक्वेंस में होना चाहिए. अगर आपने सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया, योर रिजल्ट वुड बी डिफरेंट. क्लियर? शैल वी प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़े. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, आज हम करने क्या वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू look on 10 different financial functions in Excel. We are going to look on 10 different financial functions in Excel. And first is FV, then FV schedule, then PV, rate, NPR, NPV, XNPV, IRRR, XIRR, PMT, and SLN. Okay, have you heard about these in your during your studies or something like that? क्या आपने कभी सुना है इनके functions के बारे में, पढ़ा है कहीं? Not in Excel, but in your life. Yes, in FR, financial reporting. Okay. Sheet 4 में okay. Dollar I, okay, fine. So you are getting a dollar. Now let me take this query first. So how you can change this? So the query was, whenever you're writing, suppose let me go to this sheet, and here I'm getting a dollar. Okay, I'm also getting a dollar over here. I want to change into INR. ये कैसे करेंगे? How to convert this into INR? So let's discuss this first. So what you'll do is you will go to this cell. You will press Control 1. This currency format cell button will open. यहाँ पे आपको एक symbol दिखाई दे रहा है. ठीक है? Can you see the symbol over here? Click on this and just look for INR. Just look for rupee symbol. ठीक है? जो हमारा R रुपी वाला सिंबल है, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और चलते चलते आपको ये नजर आएगा. देखिए यहाँ पर आसामी, बंगाली, हिंदी, गुजराती, हिंदी. ठीक है, these are different fonts. तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, you will get rupees, and now you can click OK. So your dollar will convert into rupee. Can you see the rupee symbol now? Does that answer your query? Is it clear? Yes. Okay. User, can you rename yourself and put your real name? Because user doesn't sound that friendly. User friendly. Chali. Anyways, we are going to the next function. We are going to start with these functions now. So, and this sheet I have tried to show some creativity इस sheet में. तो मैंने क्या किया, index में I put hyperlink. Now, how do I put a hyperlink in Excel? Anyone knows how to put a hyperlink in Excel? Do you know? So hyperlink is basically something where you click on this. When you will click on this, it will take you to some sheet. So whenever I have to navigate in Excel, मेरे को एक sheet से दूसरी sheet में जाना है, मैं सीधा उस sheet पे click करूंगा. और यहाँ पे भी मैंने एक hyperlink लगा रखा है. When I go click on index, it will take me to the next back. Suppose I want to go to NPER. I will click on this sheet NPER. It will take me to NPER sheet. And when I click on index, it will take me to index back.
Okay, so these are some things that you can learn when you learn basics of Excel or advanced Excel. तो ये सब चीजें आती हैं, ठीक है? Just to showcase you one thing, just right click on this and click on link, and whichever sheet you want to link, you want to place in this document only. So I want this to be linked to future value. So I'll click on future value. I'll select the sheet future value. I'll click on OK. You will see that FV has changes shape and position. Now, when you click on this, when you bring your mouse over here, the cursor over here, and it will be clickable button, and you can again come back to the sheet. Okay. Now let's start with the first sheet, that is future value. Okay, now all these sheets are basically case studies. So I have taken 10 case studies to explain financial functions. Don't try it right now, just try to focus on learning. Okay, so it will take 30 to 40 minutes for everything to settle down. ठीक है, आपको समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. आप अभी मेरे साथ में मत करिए. ठीक है, I will provide the session as a recording to all those who have registered for the session. Okay, but right now don't try to practice it, just try to understand the concept, right? Chali, so we'll start with this. यहाँ पे जो हर एक सेल में, हर एक शीट में आपको एक ऑरेंज बटन दिखाएगा, कमेंट बॉक्स दिखेगा. ठीक है, दिस इज अ कमेंट बॉक्स. इट इज बेसिकली अ समरी ऑफ व्हाट दिस शीट इज ऑल अबाउट. ओके, तो इसमें क्या लिखा है, कितना मिलेगा रे बाबा. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाबूराव पूछ रहे हैं कि कितना मिलेगा. ठीक है, हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू गेट बाय इन्वेस्टिंग इन अ प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, लाइक हाउ डू यू गेट टू नो कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. दिशा हैज रेज हिज हैंड, हर हैंड. दिशा, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir. नो, ओके, so no problem, you can lower it. Yes. चलिए, so Ridhima invests 1 lakh in a FD earning interest at the rate of 5.5% for 3 years. She wants to know whether what will be the value of investment after 3 years. So she wants to know what will be the value of investment after 3 years. So how do you apply the formula in Excel? ठीक है, दो तरीके होते हैं Excel में काम करने का. एक तो हम टेबल बना ले, है ना, you convert everything into a table and then you apply the formula into a table. Else, second, you can write the formula and put the values inside that. ठीक है, I prefer the table format because of some benefits. I will show you why. And otherwise you can do it uh, by putting the values also. ठीक है, so question क्या था, क्वेश्चन ये था कि रिधिमा 1 लाख रुपए एफडी में लगा रही है, 5.5% का इंटरेस्ट रेट है और 3 साल बाद ये जानना चाहती है कि 1 लाख की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर इतने सारे फंक्शंस हैं, फॉर्मूले हैं, कैसे पता पड़ेगा कौन सा काम में लेना है. दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन व्हिच आई गेट इन एवरी सेशन व्हिच आई टेक. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस बिफोर यू कैन वर्क इन एक्सेल. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है. So I'll take 1 minute to explain both the concept to you. Future value is something which you will get in the future. Future में जो मिलेगा वो future value होगी. और present मतलब क्या होता है, आज. अभी जो आपके पास है उसे बोलते हैं present value. As simple as that. So it is used to find out, future value function is used to find out the future value of a particular investment which has a constant interest rate and periodic one-time payment. Interest rate same है और एक ही बार आप पेमेंट कर रहे हैं, तब आप एफवी का फंक्शन काम में ले सकते हैं. बट अगर रेट चेंज हो रही है या हमारा टाइम पीरियड चेंज हो रहा है या हम मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट यूज एफवी. चलिए क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द आर्गुमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन. सो यू सी दैट द फॉर्मूला इज FV, rate, NPR, PMT, PV, type. Let us understand these 5 arguments. First one is rate. Rate का मतलब क्या है? It is an interest rate per period. तो interest rate per period मतलब कि जो भी interest आपको मिल रहा है वो. Per period का मतलब क्या होता है? Interest can be quarterly, half yearly or yearly or monthly also, right? So it can be monthly, quarterly, half yearly or yearly. So depending on the period, we will calculate the interest, right?
then NPR is the number of period. Number of period will be what? It can be number of period will be basically years. It can be years. Again, it can be half year, it can be a quarter, it can be a month also, right? PMT is the payment per period. So how many payments you are making? So basically it is used when the payments are recurring. Okay, if the payments are recurring, then we will use PMT. You can make these changes in your Excel also if you want, or you can note it down in your diary if you are noting down, because the best way to learn is to write things. Okay, if you just listen, you will forget. Okay, you might not get a chance to revise things, you will forget, but if you write, you will remember it forever. Okay, present value is today's value. आज की क्या value है? Today's value, right? And type means when the payment is made, beginning or end. So I'll just add this words, beginning or end. Beginning or end. I hope all these terms are clear to you. Rate, NPR, PMT, PV, type, because ये सब repeat होने वाला है पूरे sessions में, ये बहुत बार repeat होंगे ये सारे words. I hope all these terms are clear. Can we have a clear in the chat box? I want an active audience in the class. Can we have a clear in the chat box? Shrestha, Disha, Harsh, Tanish. PMT एक बार दोबारा. ओके, PMT का मतलब होता है पेमेंट पर इंस्टॉलमेंट. ठीक है, आपने EMI सुना होगा, EMI. ठीक है, नाम तो सुना ही होगा. EMI का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोन लेते हैं, whenever we take any loan, so we have to pay the loan by installment, in installment. ठीक है, तो जो periodic installments होते हैं, periodic installments that you have to pay, that is called as PMT in Excel. ठीक है, तो PMT का मतलब कि रेगुलर आउटफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड एज अ PMT. करेक्ट. तो जब वन टाइम की बात करेंगे तो हमेशा PMT क्या हो जाएगा? कैन एनीवन आंसर इन द चैट बॉक्स? मतलब इन्वेस्टमेंट इज वन टाइम, व्हाट विल बी द PMT? Shrestha has answered correctly, 0. PMT will be a 0 whenever you are investing for one time only. Correct. चलिए, so now let us do this. So there are two ways of doing it. ठीक है, two ways to finding out the solution for this. How? Please tell. What should I tell? PMT 0 क्यों होगा? See, PMT is monthly installments. ठीक है, suppose there are two things, two ways of investing. मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, आज का आज मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, बस आज ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक ही बार पैसा है, इन्वेस्ट कर दिया. 3 साल के लिए, 3 साल बाद पैसा मिलेगा. ठीक है, अब क्या हुआ? आई स्टार्टेड अ जॉब, मेरी जॉब लग गई और हर महीने मेरे पास सैलरी आ रही है. उस सैलरी में से मैं कुछ पार्ट हर महीना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर महीना, एवरी मंथ. जब व्हेन आई गेट द सैलरी, 5th को सैलरी आती है, मुझे लगता है उसके बाद जैसी सैलरी आए कुछ पैसा इन्वेस्ट हो जाए. तो आई हैव डन अ SIP एंड अ म्यूचुअल फंड. ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. दैट मीन्स एवरी मंथ हमारा पैसा हमारे अकाउंट से कटेगा और एक जगह किसी फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा. इट इज अ पीरियोडिक आउटफ्लो ऑफ मनी. हर महीना ये चलता रहेगा, 12 महीने चलेगा ये. तो वो जो 12 महीने में आपके पास पैसा जा रहा है एवरी मंथ, दैट इज कॉल्ड एज PMT. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. PMT. ठीक है, जब हम PMT पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So what I will do is I will put the rates in the elements, all the elements over here. तो मैंने यहाँ लिख दिया 10.5.5 रेट है. NPR कितना था? 3 years था. PMT 0 था, याद रखेंगे PMT 0 है क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. और जो भी PV है जो हम एक बार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अमाउंट हमें कैसे लिखना है? माइनस साइन लगा के लिखना है, माइनस साइन लगा के लिखना है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. टाइप डजंट मैटर ओवर हियर. आप 0 पुट करें, 1 करें, आंसर सेम आने वाला है. And what is the answer of this? Okay, so here you will see that here I have linked all these tables. ठीक है, so ये link कैसे किया? I will do it again with for you all. So FP is the formula for future value. First it is asking for rate. Which cell has rate? Can you give me the cell address of rate? Cell का address कहाँ से देखेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है,
The cell address, what is the cell address? E14. Okay, next, what is the cell address for NPER? E15 उसी के नीचे है, E15. PMT का क्या है? E16. E16. Then what we have? PV का क्या है? E17, कॉमा 0 और 1. आई कैन इग्नोर दिस ऑल्सो, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है. And I close the bracket. What do I get as answer? 1,70,424. Now, what is the benefit of doing this? What is the benefiting of doing this? ठीक है, हम ऐसे भी तो कर सकते थे. आप बोलेंगे सर हम टाइप भी तो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. तो FP के बाद आप टाइप करिए, 5.5 रेट है, 3 NPR है, 0 PMT है और 1 लाख नेगेटिव क्या है? इन्वेस्टमेंट है. और यहाँ पे हमने 0 लिख दिया टाइप के लिए. अगर मैं 0 हटाता हूँ, आंसर दोनों में सेम आ रहा है. ठीक है. अब FD कराने बैंक गए, बैंक ने कहा सर अगर आप 3 साल की FD करते तो 5.5% मिलेगा, लेकिन अगर आप 5 साल के लिए FD करेंगे हम आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. कितना देंगे? 7%. अब आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं 3 साल की नहीं करके 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूं तो कितना पैसा मिलेगा, बनेगा. सो अगर आपने फॉर्मूला लिखा है, अगर आपने वैल्यूज टाइप करी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, यू विल गो टू दिस, यू विल प्रेस F2 टू चेंज दिस, और यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा. क्या अपडेट करना पड़ेगा? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड क्या हो गया? 5 इयर्स. बाकी चीजें वही रही, मतलब इन्वेस्टमेंट तो हम 1 लाख ही कर रहे थे, अभी भी 1 लाख ही है. एंटर करेंगे. व्हाट डू यू गेट एज द आंसर? 1,40,225. यहाँ आपको चेंज करना पड़ा राइट. अब मैं चाहता हूं कि दोनों मुझे कंपेयर हो जाए, जो भी वैल्यूज मैंने पहले ली थी और अभी ली थी. वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा अगर आप इसकी एक कॉपी कर लेते हैं कॉलम की और यहाँ पेस्ट कर देते हैं. Ctrl+C Ctrl+V सबको आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, सबके फेवरेट की जो होते हैं एक्सेल के वो यही होते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी और पेस्ट. करेक्ट. तो हमने भी कॉपी पेस्ट किया है. अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को भी कॉपी पेस्ट करेंगे. कहाँ पे? नीचे. यहाँ कर देते हैं, आगे कर देते हैं. ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया. ठीक है. अब यहाँ इसको भी कर देते कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V. देखिए आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे हमने जो वैल्यूज ली थी वो इस टेबल से ली थी यहाँ पे. ठीक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट अनफ्रीज दिस. आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट मी शो यू. So this particular cell number G14 is having this. I am just copying this formula into H, and now what do you see? What do you see? I am getting the same result. Same result है क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम है. अब हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं. यहाँ पर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. ठीक है. यहाँ पे पैरामीटर्स क्या हो गए थे? रेट वाज 7%, टाइम वाज 5 इयर्स. डू यू सी द डिफरेंस? डू यू सी द डिफरेंस इन अमाउंट्स? आपको दोनों अमाउंट दिख रहे हैं? कैन यू सी बोथ द अमाउंट्स? यस. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ रेफरेंस इन एक्सेल. इसे बोलते हैं रेफरेंसिंग. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड अ रेफरेंस. ओके. सो when you put the reference, when you copy paste any formula, the reference is also change. मैं एक और काम करता हूँ, इसी को आगे और कॉपी करते हैं. ठीक है. अभी देखिए 0 आ रहा है. क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि तीसरे कॉलम में कुछ है नहीं. अब हम इसको वापस से कॉपी करेंगे. Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ करेंगे वैल्यू 3. एंड नाउ आई एम इन्वेस्टिंग ओनली फॉर 1 ईयर. मेरे पास एक ही साल है, 1 साल बाद पैसा चाहिए, तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. और इस बार हमारे को जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हम 1 साल ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 3.5% मिल रहा है. सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल दिस बिकम. ठीक है. तो यहाँ मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, ये कॉपी पेस्ट किया. इसी को जब आगे कॉपी पेस्ट किया तो इसने रेफरेंस ये वाला उठा लिया गलत. ठीक है. हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, अब पेस्ट करते हैं इसको. Are you getting the answer? 1,03,500. Are we getting the answer? 1,03,500. Yes. Yes. So do you understand now? Okay.
दैट इज हाउ यू कैन डू कैलकुलेशंस इन एक्सेल। तो अगली बार आपके घर में कोई भी पेरेंट्स या आप खुद अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कितना वैल्यू बनेगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट, जहां पे कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है पहले से ही पता है। डन। नाउ लेट अस टेक वन मोर केस। लेट अस टेक वन मोर केस। फंक्शन को कॉपी कैसे किया आपने? ओके, फंक्शन को कॉपी कैसे किया? सिंपल, ये यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ था, ठीक है, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया। इधर गए हम पास वाले सेल में, कंट्रोल वी दबाया, पेस्ट हो गया। लेकिन ये हैश दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि कॉलम की विड्थ कम है। इसको बढ़ाने के लिए डबल क्लिक करेंगे और ये कॉलम की विड्थ बढ़ गई। आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि इस कॉलम में वैल्यूज नहीं है, इस कॉलम में वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ हम एक नया कॉलम इंसर्ट करते हैं। नया कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं? कंट्रोल प्लस, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, एक नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कोई भी वैल्यूज आप रख सकते हैं आपकी पसंद की। मान लीजिए मुझे कहीं से 8% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, मैंने 8 रख दिया। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 4 साल के लिए और मेरे पास पैसे हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, ये जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट अ आंसर ओवर हियर। लेकिन आंसर आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ये गलत जगह से कॉपी किया। हम इसको जब आगे कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट, तो हमारे रेफरेंसेस ठीक कॉपी होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा रेफरेंसेस कॉपी हो गए। अब आपको आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 6,80,244। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कॉपी पेस्ट अ फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, नाउ इट इज अ फाइनेंशियल सेशन, तो हम फोकस उसी पे करेंगे। अगर मैं आपको बेसिक चीजें भी बताऊंगा तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। सो आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। इफ यू वांट टू आस्क अदर थिंग्स, यू कैन स्टे बैक आफ्टर 10:30 एंड देन वी कैन डिस्कस। ठीक है, अभी हम फ्लो में चलेंगे, राइट? ओके, चलिए। नाउ देयर इज वन मोर केस स्टडी। Ridhima invest 10,000 every month. What is important here is every month. अब क्या बात हो रही है? अब जो पीएमटी की अब बात कर रहे थे, उसी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि रिधिमा जो है वो कैसे इन्वेस्ट कर रही है? एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रही है। कितना इन्वेस्ट कर रही है एवरी मंथ? 10,000 पर मंथ। ओके, एवरी मंथ शी इज इन्वेस्टिंग 10,000 इन पीपीएफ, अर्निंग interest at the rate of 7% for 15 years. She wants to know what will be the value of the investment after 15 years. अब बताइए, क्या हम पीवी एफवी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें? कैन वी यूज द एफवी फंक्शन हियर? बिकॉज शी इज इन्वेस्टिंग एवरी मंथ फॉर हाउ मेनी years? 15 years and interest rate is 7%. Can we use the fv function? No. Why no? Why can't we use fv? Why can't we use fv here? एफपी में ऐसा तो नहीं लिखा था ना कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। हम मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी हम एफपी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें पीवी क्या होगा? नाउ श्रेष्ठा, कैन यू आंसर दिस? व्हाट विल बी द पीवी इन दिस पर्टिकुलर केस? इन्वेस्टमेंट इज रिकरिंग। दीक्षा, पीवी, पीवी वुड बी 1? नो। व्हाट वुड बी पीवी इन दिस केस? व्हाट वुड बी द पीवी इन दिस केस? If you have understood the concept, you would be able to answer this. बताइए, what would be the PV in this particular case study? अच्छा, what is PV? PV होता क्या है ये बताइए। What is PV? You can unmute and answer. We have a limited crowd today, so you can. Today's value. Yes. What is today's value, Diksha? In this particular case, what is today's value? 10,000. Okay. 10,000 we are investing one time or multiple times? 10,000 एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं या बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं? Recurring multiple times. Okay, so if we invest anything multiple times, will it be called as a PV or PMT? Will it be a PV or a PMT if you are investing for multiple times? Tell me, PMT, PV.
People are confused. User is saying PMT and Harsh is saying PV. What is correct? Shrishta, what is your answer? Will it be PV or PMT? PMT. Diksha, what about you? Tanishq, not answering today. Tanishq, what it will be? That particular amount PMT. Yes. See, understand. So actually, I'm in shop right now. That's why I'm not speaking No anything. problem. No problem. You can write in the chat box. No problem. So what I'm Okay, saying, sir. yeah, what I'm saying, अगर एक बार इन्वेस्ट करते हैं, आप आज पैसा लगा रहे हैं, एक बार के लिए लगा रहे हैं, that one time investment will be called as PV, present value, correct? But if you are investing the money for multiple times, every month, every quarter, every year, you are investing uh, for a regular basis, on a regular basis for a n number of period, then it will be called as a PMT. Getting it? तो पीवी और पीएमटी में इतना सा डिफरेंस है. अगर हम एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीवी है, अगर हम बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? पीएमटी. क्लियर? चलिए, I'm going very slow because I want you to understand concepts. ठीक है? So I hope it is going good, or you want me to speed on? या ठीक चल रहा है? Because अगर हम fast करेंगे तो maybe you will skip and the ultimate objective of this session will be defeated. Okay. So yes, great. चलिए. Now, if I tell you कि can we use FE now? Now answer this question. Can we use the FE formula to find out the value of the investment after 15 years? 15 साल बाद 10,000 रुपए? No. Shrishta is saying no. Why, Shrishta? Why not? Why no? You can unmute and answer this question. Why no? Why do you think no? Because PV नहीं है हमारे पास. अच्छा, तो पीवी नहीं है तो क्या एफवी फंक्शन नाराज हो जाएगा? नहीं बोलेगा कि पीवी नहीं है, पहले पीवी लाओ फिर हम काम में लेंगे, ऐसा होगा? पीएमटी है ना, पीवी नहीं तो पीएमटी सही. आर यू गेटिंग इट? देयर इज ऑप्शन हमारे पास. अच्छा एक बात बताइए, इसमें इस वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया था पहले वाला, क्या हमारे पास यहाँ पर, क्या हमारे पास यहाँ पर पीएमटी था? क्या इसमें पीएमटी था? पीएमटी में हमने क्या लिखा था? 0. तो क्या हम इस बार पीवी में 0 नहीं लिख सकते हैं? इज इट yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, definitely. And that is what we are going to do now. यही करने वाले हैं हम. लिख सकते हैं तो लिखते हैं, अगर लिख सकते हैं तो लिखते हैं. ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे एफ वी का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए. एफ वी, ठीक है. एंड लेट मी जस्ट मर्ज दी सेल तो वी कैन सी इट प्रॉपरली. इसको हम होम में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ से साइज इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, और इसके पीछे बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ और इसके फॉन्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ. ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ वी का फंक्शन. एफ वी rate. Now you guide me. What should be the rate? What should I put at as rate? 7%? 7%. Comma. What is NPER? 15. Right? Should I put 15 as the NPER? Yes or no? NPER is 15. What is PMT? 10,000. PMT is 10,000. So minus, because it is a outflow. पैसा जा रहा है, माइनस लगाएंगे. पीवी क्या हो जाएगा? 0. पीवी विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो वन टाइम इन्वेस्टमेंट. ठीक है, पीएमटी जो पहली बार कर रहे हैं ना उसको भी पीएमटी बोलेंगे हम, क्योंकि एक बार नहीं हो रहा, बार बार हो रहा है. ठीक है, टाइप में आप क्या रखें? अब यहाँ पर क्योंकि पीएमटी है तो ये पता लगाना जरूरी है कि ये बिगिनिंग में हो रहा है या फिर एंड में हो रहा है. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि 1 है या 0 है. ठीक है, टाइप 1 लिखा हुआ है वहां पर तो हम 1 ले लेते हैं. दैट मीन्स इट इज द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. एंड लेट मी हिट एंटर. आंसर देखिए क्या आया, 2,68,880. इज इट द राइट आंसर? आई एम गेटिंग अ डॉलर. ठीक है, डॉलर से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भैया भारत, हम उस देश के वासी हैं, तो इसमें रुपी लगाइए आप, डॉलर नहीं चाहिए हमारे को.
हमें चाहिए रुपी, सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ रुपी। चलिए, ये मैंने रुपी बना। बट इज इट द राइट आंसर? कैन एनीवन टेल मी, इज इट द राइट आंसर? यस और नो? आप ये बताइए, हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड इन 15 ईयर्स? इफ यू इन्वेस्ट 10,000 एवरी मंथ, ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर हम 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो एक महीने, एक साल में कितना होगा? 1,20,000। और 15 सालों में कितना इन्वेस्ट हो जाएगा? 18 lakhs। ओ माय गॉड, सच अ बिग अमाउंट, इजंट इट? 18 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए। और Sir, I guess there is a problem in period. Like we have to take it is every month. वी हैव टू So टेक इट एज monthly basis, on monthly monthly basis. basis. Very good. So there is not only a problem in the period, but there is a problem with the interest rate also. That is what I am going to explain you. इसलिए मैंने ये जानबूझ के पहले ये गलती करी थी, अब हम इसको सुधारेंगे। that is how you can learn it better। ठीक है, अब देखिए दो गलतियां हैं यहाँ पर। क्या गलती हुई है? ये जो रेट है, दिस रेट इज पर एनम रेट, PA, पर एनम रेट। ठीक है, पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती जो है, ये 15 ईयर्स का पीरियड है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि 10,000 रुपए आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? पर मंथ में। कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? पर मंथ। इट इज अ मंथली इन्वेस्टमेंट, इजंट इट? इट्स अ मंथली इन्वेस्टमेंट। यस और नो? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. यस। ठीक है, तो 18 Yes, लाख रुपए sir. लगा के अगर सिर्फ 2,80,000 मिलेंगे, 2,68,000, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, so are you understanding that there is a problem and we need to rectify it? So how do I rectify the problem? How do I rectify it? ठीक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना होगा, you have to remember this, and this is basic mathematics। ठीक है, अगर 7% 12 महीने का रेट है, तो एक महीने का कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? How do you calculate the rate per month? 7% by 12. 7% divided by 12, correct? And if I have to convert 15 years into number of month, what should I do? 15 into 12. Very good. So what we have to do is, basically we have to convert the investment which we are doing on a yearly basis to a monthly basis. So we will divide the rate by 12 and we will multiply the years by number of months. Okay, and now I am pressing. Is there any other mistake in the function? PMT is 10,000, PV is 0, type is 1. I think everything else is now fine. Let us see what we are getting as a result now. Let us see what we get as the answer now. What do you see? What do you see now? 31,88,112. Does it look good? क्या ये ठीक है जो ये अमाउंट आया? अब ये ठीक लग रहा है? क्या ये सही है? हाँ कि ना? Is this value right? Yes, sir. Yes. This is now correct. Why it is correct now? Because we have removed the errors. हमने दोनों चीजें हटा दी हैं। क्या क्या गलती थी हमारे पास? एक गलती तो यहाँ पे थी, ठीक है, एक गलती तो यहाँ थी। This one was one mistake, rate, and this was another mistake, year। इसको हमने ठीक कैसे किया? इसको हमने यहाँ से ठीक किया। कहाँ से? इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन से। इसको हमने डिवाइड करा 12 से, इसको मल्टीप्लाई करा 12 से, एंड नाउ दैट इज हाउ वी हैव गॉट द राइट आंसर। यस, चलो, if you have understood this, we can move to the next part। Okay, suppose now if I ask you this question, कि this we are investing on a half yearly basis or a quarterly basis, can you find out, can you give me the answer now? Try it. If it is a quarterly or a half yearly investment, what would change? I'm waiting for one, I'm giving you 2 minutes to do it. Do it and drop your answer in the chat box. Okay, do it and drop your answer in the chat box.